you for revising. For revising me. All of you completed yesterday's. Okay, yesterday's homework complete किया है सबने. Okay. Right. So, yes, I have started chapter number 1 from the CBSE syllabus, that is food and its sources. So, just like the four-wheeler, two-wheeler, it need the fuel to run. Okay, to run the vehicle, it need the fuel. Like this, our body is also machine, and it also okay. I have already sent the recording of yesterday's class, and those students who absent, they have to watch the recording. Okay, my sound is okay. Anyone is saying that your voice is breaking? Just show me your thumb. My sound is okay. Swajit, my sound is okay. Manasvi, sound is breaking. Okay, maybe in your area there will be a net issue. So yes, continuing. So just like the two-wheeler, four-wheeler vehicles, it need the fuel. So our body is also machine, and it also need the fuel. And that fuel is food. Okay, that fuel is food. Okay, so food gives us the energy to perform the different activities. Yes, to perform the different activities and to perform the different functions. Just 1 minute, I check. From my side, sound is full. Just 1 minute, I check. Okay, from my side, sound is full. From my side, I have on sound up to the level of 100. Okay, 100 के level तक मैंने sound on कर दिया है. So the food atom which we eat on a large proportion, that food atom is called staple food. That food is called staple food. And in the food, there are nutrients are present. Okay, chemical substance which are present in the food, that chemical substance are called nutrients. There are five major nutrients. Along with this water, roughage, it is also present. Then a particular variety or the preparation of food serve as a part of main meal, that is called the dish. Most of the food items that we eat, they are made from the ingredients. Okay, ingredients are the substance which are used to make the dish. Okay, so we obtain the food from the two main sources, that is plant source and next one, that from the two source, that is plant source, and next one, that is animal source. Okay, and again, beta, maybe in your area there is a net issue. Shreya. Yes. Maybe your area there will be net issue. Okay, so we obtain the food from the plants. Plants make their own food.
Now try to listen. Okay. So we obtain the food from two sources. Okay, we obtain the food from two main sources, that is the plant source and next one animal source. Okay, so plants make their own food by the process, and that process is called photosynthesis. Yes, and green plants are also called producers. So plants from the plants having the different part like root, stem, leaf, flower, fruits, okay, seeds. Then the stem having the outer covering, that is called bark. Okay, so plant having, yes, seed also. Plant having the different part, and we are using the different part of the plant as the food. So we obtain the food from the roots, we obtain the food from the stem, we obtain the food from the flower, we obtain the food from the leaves, then from the fruits, from the seeds. Okay, and I have already given you the list of cereal, pulses, oil seeds, fruits, beverages. Okay, I have already given you to the list. So those are the food item. Now my sound is okay. Manasri, my sound is okay. Just show me your thumb. Now my sound is okay. Online student, just send me the message or just show me your thumb. Prajwal, my sound is okay. Sanvi, okay, that's good. Okay, that's good. Okay, so next one, that is we obtain the food from the next source, that is the animal. Okay, so animal also provide us a variety of food products such as milk, meat, egg, honey. Okay, as fish. Yesterday we have seen that is the animal product. Milk, okay, and milk producing, milk giving animal, they are called milk animals. Very good. And the milk product is called dairy products. Okay, and in the milk there is a lactose sugar is present. In the second chapter, component of food, in that I will teach you the different type of sugars. Next one, that is eggs. Those birds which give the egg, they are called poultry. Then meat, a large population of the world is depend on the meat as a staple food. Okay, as a staple food. Then next one, fish, honey, that one we have seen yesterday. Okay, now food habitat of the animals. Plants make their own food, animals do not make their own food, they are depend on the others. So depending on the food habitats, animals are also classified as herbivores, carnivores, omnivores, scavenger, host and parasite, and decomposers. Yes, वो सब टाइप है. Yes, fruits, जो fruit खाते हैं, frugivores. Okay. Okay. Milk product are those products which are formed from the milk, which are made with the help of milk. Milk से curd बनता है, buttermilk बनता है, okay, then ghee बनता है, पनीर बनता है, okay, cheese, okay, those products which are formed from the milk, they are called milk product. Okay, then
Again, coming to our point, that is classification of animals on the basis of food habits. Okay, on the basis of food habits. Okay, on the basis of food habits, animals are classified as herbivores, then next one carnivores, then next one omnivores, scavenger, host and parasites, and decomposers. Yesterday we have already discussed. Yes, now is it okay? Okay, now next one about the food chain. So food chain shows that how living organisms are depend on each other, and food chain tell us that is who eat whom. Okay, food chain से हमें क्या समझ में आता है? Who eat whom? Yes, yes, Aryan. Yes. Okay, now every food chain compulsory start with plants. Producers. Yes, plants, but हम उसको क्या बोलते हैं? Producers. Okay, every food chain compulsory start with the producers. Plant make their own food, so they are called producer, and they form the first level of the food chain. Now to these plants, okay, producers, or it is also called plants. Now next one, that is consumers. Okay, next one, that is consumers. So in the consumers there are primary consumers. First one, that is primary consumers, and generally primary consumers कौन होते हैं? Herbivores. ओके, जनरली वो कौन से होते हैं? हर्बिवोर्स, प्लांट ईटर. ओके, जनरली कौन से होते हैं? दैट इज द हर्बिवोर्स. देन टू दिस प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको कौन खाता है? दैट इज द सेकेंडरी. उनको कौन ईट करता है? दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जनरली कौन से होते हैं? कार्निवोर्स. Okay, generally they are carnivores. Then next one, उनको कौन खाता है? That is tertiary. Okay, next one, that is tertiary consumers. Tertiary consumers में generally carnivores, scavenger भी उसमें आ सकते हैं. Okay, yes, yes. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स में जनरली कौन होते हैं? दैट इज द कार्निवोर्स. कभी कभी स्कैवेंजर भी उसमें आते हैं. दैट इज द यस, इवन डिकम्पोजर भी उसमें आ सकते हैं. ओके, सो producers, plants, then plants eater, primary consumers, animal eater, secondary consumer, and then next one, that is the tertiary consumers. Animal, okay, animals depend on the plants for their food and requirement. They are called consumers. Consumers are again classified as primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers. Okay, so plant eater, for example, rabbit, grasshopper, they are called primary consumers. Animal that eat the primary consumer, they are called secondary consumer. And secondary consumers are eaten by the tertiary consumers. So in the environment, there are many food chain are exist. And organism can be a part of more than one food chain. This network of food chain, okay, this network of food chain is called food web. Okay, food web means network of food chain. Okay, network of food chain, that is called food web. In the food web there are many food chains are interconnected, interlinked, and it make the food web. उससे क्या बनती है? फूड वेब बनती है. Okay, so yesterday I have given you the one homework, that is you have to find out how many food chain are present in that picture.
ओके, जस्ट 1 मिनट, आई एम अगेन शेयरिंग। ओके, वो जो इमेज थी उसमें कितने फूड चेन प्रेजेंट है। ओके, अगेन स्टार्ट टू फाइंड आउट। पहले उन इमेज में से एनिमल आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन से एनिमल है। फर्स्ट वन प्लांट, प्लांट के बाद क्या है, स्क्विरल, देन फॉक्स का पिक्चर है, स्पैरो का है, कैटरपिलर है, बटरफ्लाई है, फ्रॉग है, स्नेक है, अगेन ईगल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल आइडेंटिफाई कर लिया आपने उसमें की। अद्विक डोंट यूज बेटा, ओके, डोंट यूज। Are you able to see the picture? Anyone have the book? Okay, take this one also. So identify that how many food chain are present. Okay, and just don't use the whiteboard. So some student have tell me that is 10 food chain are present. Someone says that there are 11. Okay, then what about others? How many food chains are present? Don't use the whiteboard. Okay, 7. May I repeat? First one plant, then next one that is squirrel and fox. Standing वाले एक बन गई. Then plant, then bird and fox. ये भी एक बन गई. Plant, bird, snake, eagle. ये हो गई थर्ड नंबर की. Plant, bird, eagle. ये हो गई 4 नंबर की. Plant, insect, bird, fox. ये हो गई 5 नंबर की. Plant, insect, बर्ड, स्नेक, ईगल. ये हो गई 6 नंबर की फूड चेन. प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, ईगल. ये हो गई 7 नंबर की. प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल. ये हो गए 8 नंबर की. प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, ईगल. ये हो गई 9 नंबर की. प्लांट, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्नेक, ईगल. ये हो गए 10 नंबर की. प्लांट, बटरफ्लाई, फ्रॉग, ईगल. ये हो गई 11 नंबर की. ओके, लाइक दिस. ओके, 12. Okay, like this, someone says that 11, someone says that 12. So you have to write down proper. Okay, here one student have write down very nicely. Okay, okay, 11 food chain. Okay, if you think that there are 12, then write down proper. Are you able to see? आपको दिख रही इमेज? Okay, like this you have to also identify. Very good beta, Devansh, Devansh. Very good. Okay, like this you have to also identify that how many food chain are present in the food web. Okay, so understand about this chapter. Yesterday anyone have asked me that is human being is host. Yes, in our body there are tapeworm are present, hookworm are present. Okay, so tapeworm, hookworm are parasite. So human body is host. Even animal is also host. Yes, mosquito suck our blood. We are host. Mosquito is parasite. Okay, and human being omnivorous है, ये भी सबको पता है कि नहीं? Is it okay? Okay, so now we discuss the question and answers. Okay, we discuss the question and answer exercise. This exercise also you have to write down in short, okay, in your notebook. See exercise में से A, B, C, D. Okay, every time आपको A, B, C, D questions you have to write down in your notebook. जो नेक्स्ट वन E and F लॉन्ग क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द लॉन्ग क्वेश्चंस बिकॉज फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आने ही नहीं वाले हैं. यस ना, होमी बाबा के फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन है? नो, इन द फाइनल एग्जाम देयर आर ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो आपको नोटबुक में प्रैक्टिस जोन के A,
बी सी डी क्वेश्चंस कंपल्सरी नोट डाउन करना ही. ओके, राइट डाउन द, you can write down directly also, shortcut also, or complete sentence also, but compulsory write down the give the heading practice zone A B C D. Okay, सिर्फ short long question no need to write down because final में long question नहीं आते हैं. Very fastly we discuss, and today only I start the second chapter also. So dash dash is edible stem, you can use this. ओके, कैरोट, बीटरूट, पोटैटो एंड कैबेज, इसमें से कौन सा एडिबल स्टेम है? यस, पोटैटो. ओके, पोटैटो. द इडेबल पार्ट ऑफ व्हीट प्लांट इज, हम व्हीट खाते हैं, इडेबल पार्ट कौन सा है? व्हीट का इडेबल पार्ट कौन सा है? सीड. सीड, वेरी गुड. Okay, then which of the following statement is not true for the scavenger? It lives on or inside the body of another organism. This one is not true for the scavenger. D, 4 is D. Then choose the correct food chain. Grass, giraffe, and lion. Fifth is B. Okay, choose the correct option. Fifth one is B. You have to do the Xerox of that PDF. Then next question, the substance that are present in the, fill in the blanks. The substance present in the food that help the body to grow and stay healthy, that substance is called nutrient. Okay. Green plants are also called producers. Meat eater is known as carnivorous. Plant eater, both eater, omnivorous. Okay. Then dash dash and dash dash are the example of decomposers, bacteria and fungi. Yes, bacteria and fungi are the example of decomposers. Now, network of interconnected food chain is called food web. When many food chain are interconnected, that is called food web. Now, give the example of following: an edible plant stem. Potato. Okay. Again, only potato hai. Onion. Okay. Ginger, garlic, turmeric, sugarcane. Very good. Then next one, food atom obtained from the hen. Meat egg. Yes, meat egg. Animal that fed on dead animal. Scavengers, decomposers. Okay, dash dash is example of primary consumers. आप डायरेक्टली हर्बिवोरस भी बोल सकते हो, डायरेक्टली हर्बिवोरस भी बोल सकते हैं, और यू कैन गिव द एग्जांपल आल्सो. Then animal that feed on plants. Herbivorous. Okay. Then next one, give an example of plant that has two or more edible parts. Okay, ऐसी कौन सी प्लांट है कि जिसके टू और मोर एडिबल पार्ट है? फेन्यूग्रीक. फेन्यूग्रीक के देखो हम लिप भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं. देन मस्टर्ड, मस्टर्ड के फ्लावर की वेजिटेबल भी बनाते हैं एंड उसका सीड भी यूज करते हैं. देन ड्रमस्टिक. ओके, ड्रमस्टिक के भी लीव्स भी यूज करते हैं, देन फ्रूट भी यूज करते हैं. देयर आर सो मेनी एग्जांपल कि जिसके हम टू पार्ट्स यूज करते हैं. Okay, I have given one example, that is fenugreek, then mustard. Okay, उसका yes, two parts यूज करते हैं. Yes, yes. Okay, next one, write the term used for the animal that give the milk. I have already teach milk animals. Very good. Those animals which give the milk, they are called milk animals. Name the animal that live in or outside the body of animals. Parasite. And parasite is depend on host. होस्ट. पैरासाइट किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? होस्ट. पैरासाइट खुद का फूड खुद बनाते हैं? नो.
नो, दे आर डिपेंड ऑन द host. पैरासाइट के दो टाइप है, कल मैंने सीखा है. दोस पैरासाइट which is present outside the body, that is called ectoparasite. Outside the body, ecto. For example, very good example, mosquito, leech, okay, and lice. Then those parasite which is present inside the body, endoparasite. There are two example. बैक्टीरिया तो है, along tapeworm, hookworm, tapeworm, hookworm. Okay, understand? Next one, what kind of teeth does the deer have? Herbivorous. Herbivorous के two है, sharp front sharp and back side wide. Front sharp and back side wide for grinding teeth. Yes. Then what do the decomposers feed on? Dead and decaying plants and animals. Yes, dead and decaying plants and animal. So in your notebook, you have to write down practice zone A, B, C and D. I will check your notebook randomly. मैं किसकी भी नोटबुक चेक कर सकती हूँ. मुझे ऐसे लगा सानवी की नोटबुक चेक करना है तो सानवी के मम्मी को मैं कॉल लगाऊंगी. मुझे लग चेक करना है अर्पिता की तो अर्पिता के मम्मी को, विधि की तो विधि के मम्मी को, मन किसी के भी मम्मी को मैं रैंडमली कॉल करूंगी, वीडियो कॉल करूंगी और बोलूंगी आपके सन डॉटर की नोटबुक आप शो करना है. सो कंप्लीट योर राइटिंग डेली. जो भी होमवर्क है सेम डे को आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. आई विल चेक रैंडमली. किसकी भी नोटबुक में चेक कर सकती हूँ. डायरेक्ट आंसर ओके नो प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन यू शुड नो ना बेटा. आपने क्वेश्चन नहीं लिखा तो क्वेश्चन के लिए आपको फिर से टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा. इतना शॉर्टकट मत करो ना. आई विल शेयर यू द पीडीएफ. सबको मैं फिर से लगे तो पीडीएफ रीशेयर कर दूंगी. ओके, अदरवाइज डू द जेरोक्स और यहाँ पे जेरोक्स पे ही पेन से आप लिख सकते हो. देखो आपको कैसे इजी आएगा. अर्चित, आई हैव ऑलरेडी सेंड द पीडीएफ ऑन द ग्रुप. डोंट से मी दैट आई डोंट हैव टेक्स्ट बुक. मैंने ग्रुप पे शेयर की है. यस और नो? यू हैव ऑल्सो सीन द ग्रुप. मैंने ग्रुप पे पीडीएफ शेयर की है. यस, आई हैव शेयर द पीडीएफ ऑन द ग्रुप. डोंट टाइप द मैसेज दैट इज आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक. मुझे पता है आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है. आई हैव ऑलरेडी शेयर द पीडीएफ ऑफ चैप्टर नंबर 1. क्लियर? इज इट ओके अर्जुन? मैंने पीडीएफ शेयर की. अर्जुन ने होमवर्क कंप्लीट किया. ओके, सेंड मी द फोटोग्राफ्स. ओके, जिन्होंने जिन्होंने होमवर्क आज फिर से प्रैक्टिस जोन ए बी सी डी कंप्लीट करना है. एंड आफ्टर दैट सेंड मी द ओके, मुझे इमेज शेयर करना है. ए नंबर का क्वेश्चन था चूज द करेक्ट ऑप्शन. बी नंबर का क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स. सी नंबर का क्वेश्चन था गिव एन एग्जांपल. एंड डी नंबर का क्वेश्चन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? Okay, so again I would like to tell you one information regarding the milk animal product. Yes na, milk animal product hai. There are so many things. Hey, don't send the message to anyone who joined from HZ. कौन HZ exercise से join हुआ है? Don't send the message to anyone. Otherwise, I will remove you from the group and from the class. Okay? Who joined from that rename? कौन join हुआ है? Name से X, Z, Y क्या है? Arohi say that anyone have sent the message. Who joined from that ID? कौन join हुआ है? Rename, compulsory rename and on your camera it's a compulsory. Who joined from 13, 12, 13? Compulsory rename yourself. ये HZ से कौन join हुआ है? Rename, otherwise I will remove you. ओके, कौन है ये? एच जेड एक्स एच एच जे. हु जॉइन फ्रॉम दिस आईडी?
Unmute and rename on your camera. Otherwise, I will remove you from the group. Just I giving you 2 minutes. Okay. So is it okay about the chapter number 1? Anyone have any doubt? Chapter number 1 सबको समझ में आ गए हैं? Yes. Okay. So in the chapter number 1, we obtained the food from the animals also. In that milk, I would like to give you one extra information. There was a name of the scientist. Okay. Are you eating the ice cream of Amul? Amul का आइसक्रीम सबने खाया है? Yes. Okay. Mute yourself. Compulsory mute yourself. Okay. So अमूल की जो फैक्ट्री है, ओके, मिल्क के जो अलग अलग प्रोडक्ट है अमूल के फैक्ट्री में बनते हैं. So all products of milk. Okay, there was a one scientist, that is Dr. Verghese Kurian. Okay, Dr. Verghese Kurian is called father of white revolution in India. Okay, anyone? Yes. Anyone the father of green revolution? जो स्टूडेंट पहले से ज्वाइन है उनको मैंने सिखाया है. Okay, who is the father of green revolution? Anyone? Who is the father of green revolution? Yes. Lavanya, very good, beta. M.S. Swaminathan. Yes, very good. Okay, M.S. Swaminathan. Okay, so like this, M.S. Swaminathan was the father of green Milk revolution. production. Okay, green revolution. Okay, like this, Dr. Verghese Kurian is known as the father of white revolution in India. He is also known as milkman of India. उनको और क्या बोलते हैं? Milkman of India. And they have started Amul product. Okay, Amul काय बरोबर आहे ना? जो भी सभी प्रोडक्ट है. Okay, and he honored with the Padma Vibhushan Puraskar. उनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है. And they have developed many milk products. Okay now. So maybe MCQ में okay, MCQ में 1 minute. I remove that person. Just 1 minute. Just 1 minute. I remove that person. So is it okay? Can I start chapter number 2? Okay. Read the chapter number 1 very carefully. If you have any doubt, then we discuss. Okay. So now I am going to start chapter number 2, component of food, and I have already sent the PDF of that chapter also. Okay, chapter number 2, component of food. Okay, from the CBSE syllabus, chapter number 2, components of food. Components of food. Hello. Yes. Okay. बरं, चालेल. ओके ओके चालेल. ओके 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 ओके
सो चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, यहाँ पे जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं और स्टेट बोर्ड के भी है, तो आई थिंक आपके सबके बुक में ये चैप्टर प्रेजेंट है. कंपोनेंट ऑफ फूड देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स. ओके, देयर इंफॉर्मेशन, देयर डेफिशिएंसी, डिसीज है सबके टेक्स्ट बुक में. ओके, नियर अबाउट मैक्सिमम बच्चों के टेक्स्ट बुक में चैप्टर प्रेजेंट है, बट सम पॉइंट आर लेस, सम पॉइंट आर मोर. थोड़ा बहुत चेंज है. यू कैन यूज योर ओन टेक्स्ट बुक आल्सो, नो प्रॉब्लम. ओके, आपके पास आपकी जो भी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है उसमें से भी आप रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. you can use, you can read from your school textbook also. I think in Poddar there is a chapter 1. ओके, उसमें सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी के सीबीएसई की बुक में है. इवन आईसीएसई बुक आल्सो देयर इज दिस चैप्टर. यस ना सनवी, है कोई प्रॉब्लम नहीं. सबके जो भी आईसीएसई के हैं उनके भी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर प्रेजेंट है, सिर्फ हेडिंग चेंज हो सकता है. ओके, टाइटल में भी चेंज. ओके, बिकॉज 6 स्टैंडर्ड में यस जो भी है सबके इसमें ये कंपलसरी ये चैप्टर प्रेजेंट ही है, that is component of food. So first one again may I repeat, you should know the definition of nutrients. Okay, you should know the definition of nutrients. The chemical substance which are present in the food and they are important for growth and stay live. Okay, they are important for the growth and essential for the development of our body. They are called nutrients. Okay, so which are the major nutrients in our food? There are 5 major nutrients in our food: carbohydrates, proteins, fat, vitamin, minerals, and along with this, water and roughage. Okay, along with this, water and roughage is also present. So today I start with first nutrient, that is carbohydrates. Okay, today I start with the first nutrients, that is carbohydrates. Okay, so carbohydrate is also called staple food. कार्बोहाइड्रेट को और हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्टेपल फूड. ओके, सो देयर आर 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, minerals. Okay, and those are important for the growth of our body, proper functioning of our body. Okay, so along with this, water and roughage is also present. So first one I start with the carbohydrate. Okay, our body require the energy to do the work, to perform the different activities. So carbohydrate is the major nutrient which gives us the energy. So carbohydrate is also called energy giving food. Okay, carbohydrate is also called energy. Even fat को भी बोलते हैं energy giving food. No problem. Okay, so carbohydrate is called energy giving food. Okay, those are the major part of staple food. ओके, स्टेपल फूड में देखो मैंने आपको बताया हम खाना खाते हैं, हमारे प्लेट में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? चपाती. साउथ इंडियन है तो राइस. सो दैट इज कॉल्ड स्टेपल फूड. यस, सो कार्बोहाइड्रेट इज द स्टेपल फूड. Okay, now this carbohydrate is also classified. Okay, it is also classified into 3 groups. Carbohydrates का classification 3 groups में होता है, that is starch, sugar and fiber. Okay, it is also classified into sugar, then next one that is starch, and next one that is fiber. It is also classified as sugar, starch and fiber. It is also classified into 2 types, that is simple carbohydrate and next one complex carbohydrate. Simple carbohydrate, it is also classified as simple carbohydrate and next one that is complex carbohydrate. उसके और
when you are reading the state board book, उसमें 3 टाइप दिए हैं, that is starch, sugar, fiber, and CBSE की बुक में 2 ही दिए, that is simple carbohydrate and next one that is complex carbohydrates. Okay, main 2 types हैं, that is simple carbohydrate and next one that is complex carbohydrate. So simple carbohydrate, why it is called simple? Because it is easily mixed in our blood. Okay, why it is called simple carbohydrate? Because it is easily soluble. It is easily soluble in blood. ब्लड में इजीली सोल्यूबल हो जाता है, ब्लड में इजीली मिक्स हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट. This carbohydrate easily absorb in the blood and give energy very fastly. It gives the energy very immediately. And they are also called sugar. उनको और क्या बोलते हैं? Sugar. Simple carbohydrate, they are also called sugars. ओके, सो ग्लूकोज, देखो समर के डेज चलो, अब बाहर से खेल के आए, ओके, आपने ग्लास में वाटर लिया, ग्लूकॉन डी ऐड किया, ओके, ग्लूकॉन डी पी लिया, आपको इंस्टेंट एनर्जी आती है. सो ग्लूकोज इज simple carbohydrate. It is easily mixed in water also, it is easily mixed in the blood also. ओके, आप ग्लूकोज पीते हैं ना समर के डेज में, टैंक टैंक ग्लूकोज जो भी है, कोई कोई टैंक पीता होगा, ग्लूकोज पीता होगा, ओके, रसना, शरबत. सो ग्लूकोज, ओके, so glucose is a simple carbohydrate. What is the meaning of simple carbohydrate? Those carbohydrate which is easily absorbed, okay, which is easily absorbed in the blood. blood में easily absorb हो जाते हैं. For example, glucose. Okay, so if patient is unable to take the solid food, then to that patient there is a saline is given, and in that, yes, energen, yes, very good, in that saline is also given, and in that glucose, okay, in that glucose is injected, glucose is given, because that glucose, yes, ORS, that glucose is easily mixed in our ब्लड. आपने पेशेंट देखा है, जो पेशेंट सॉलिड नहीं खा सकता, उनको सलाइन लगाते हैं, तो सलाइन में से क्या पास करते हैं? ग्लूकोज. क्या देते हैं पेशेंट को? ग्लूकोज. सो ग्लूकोज क्यों देते हैं? ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इजीली ब्लड में मिक्स हो जाता है एंड इंस्टेंट, वेरी फास्टली, इमीडिएट एनर्जी मिलती है. ओके, सो दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज गिवन टू द पेशेंट, बिकॉज इट इज इजीली मिक्स इन द ब्लड, easily absorb and obtain the instant energy. Okay, so this simple sugar, okay, simple carbohydrate, it is also called simple sugar. It is present in the fruits, table sugar, honey. Okay, इन सब में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? दैट इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो इन दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर के? ग्लूकोज, fructose, galactose, maltose, lactose, sucrose. Those are the example of simple carbohydrate. ओके, उसको शुगर भी बोलते हैं एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कार्बोहाइड्रेट उसके 2 टाइप है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये तो समझ में आ गया सबको? जस्ट शो मी थंब. दो टाइप समझ में आ गए? चलो, वेरी गुड. तो उसमें से वन टाइप कौन सा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट टाइप कौन सा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल? बिकॉज इट इज इजीली absorbed in the blood and we obtain the energy fastly, immediately. Okay, that's why glucose is given to the patient, because glucose is simple carbohydrate.
ओके, इजीली ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज गिवन टू द पेशेंट। एंड ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और किस में प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट में, टेबल शुगर, हनी, इन दैट सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज present. Which are the example of simple carbohydrate? Glucose, fructose, galactose, maltose, lactose, sucrose. These are the example of simple carbohydrate. Now second type, that is called complex carbohydrate. So how this complex carbohydrate is formed? Suppose this one is the picture of simple carbohydrate. When many simple carbohydrate combined together, it forms the long chain, and that one is called complex carbohydrate. Complex carbohydrate किससे बनते हैं? Simple carbohydrate से. For example, this is the glucose. सिंगल एक सर्कल क्या है? ग्लूकोज. ऐसे मेनी सर्कल, मेनी लॉन्ग चेन. ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, many simple carbohydrate are joined together, it make the long chain and it make the complex carbohydrate. In short, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से. ऐसे मेनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक साथ सेम टाइप के, ग्लूकोज ग्लूकोज सेम टाइप के मेनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होके लॉन्ग चेन बनती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. Okay, this is made up of long chain of simple carbohydrate or sugar. Okay, so this is called complex. Why? It does not easily absorb in the blood and does not give the energy fastly. Okay, why it is called complex carbohydrate? Do not absorb in the blood easily. Okay, do not absorb in blood easily. And simple में क्या होता है? Absorb in the blood easily. Simple में क्या होता है? Immediate energy मिलती है. Complex में immediate energy मिलती है? No. This complex is first broken down into simple and then energy मिलेगी. Complex first broken down into simple and then we obtain the energy. So do not absorb easily in the blood and we do not obtain the instant energy. It give the energy very slowly and this give the energy very fastly. Simple कैसे energy देते हैं? Immediately. And complex, first they are converted into simple and then they give the energy. Okay, so complex carbohydrate not easily absorb in the blood, okay, and do not provide the energy immediately. It give the energy very slowly. Okay, and they are called complex carbohydrate. So which are the example of complex carbohydrate? Starch. Okay, starch is complex carbohydrate. Cellulose. Cellulose is complex carbohydrate. And next one, fiber. It is the complex carbohydrate. Okay. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल कौन कौन से हैं? दैट इज स्टार्च, देन सेल्यूलोज and then next one fiber. They are example: starch, cellulose, fiber, glycogen. They are the example of complex carbohydrate. Okay, so in that is the starch. Okay, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स में स्टार्च. सो कौन से फूड आइटम में स्टार्च है? व्हीट. ओके, व्हीट. चपाती खाते हैं सब लोग, चपाती, ब्रेड. ओके, व्हीट से बने हुए, व्हीट से बने हुए ऑल सब्सटेंस, व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता. ओके, इन ऑल दैट स्टार्च इज प्रेजेंट. ये सब में क्या प्रेजेंट है? दैट इज द स्टार्च इज प्रेजेंट. मैं रिपीट अगेन. Okay, are you able to see the board? First one, how many type of carbohydrate? Two. Carbohydrate is called energy giving food. Carbohydrate को क्या बोलते हैं? Energy giving food. It is also called स्टैपल फूड. और क्या बोलते हैं? स्टैपल फूड. कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप है? टू टाइप.
Simple carbohydrate, complex carbohydrate. Simple carbohydrate is also called sugar. Sugar. उसको और क्या बोलते हैं? Sugars. Okay. So this simple carbohydrate is easily absorbed in the blood, and we obtain the energy immediately, fastly, instantly. So they are called simple carbohydrate. For example, glucose, fructose, galactose, lactose, maltose, sucrose. Those are the simple carbohydrate. Next type, complex carbohydrate. How it is formed? When many simple carbohydrate, when many simple carbohydrate are joined together, it make the long chain. कॉम्प्लेक्स किससे बनते हैं? सिंपल से. बट ऐसे कितने सिंपल? मेनी. Many simple carbohydrates are joined together, it make the long chain, that is called complex. Do not absorb easily in the blood. ब्लड में इजीली एब्सॉर्ब नहीं होते. डू नॉट ऑब्टेन एनर्जी फास्टली. इससे एनर्जी स्लोली मिलती है. व्हाई? बिकॉज दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड देन ऑब्टेन द एनर्जी. थोड़ा लॉन्ग रूट है. ओके उसका कन्वर्शन किसमें होता है? सिंपल में. उसके बाद एनर्जी मिलती है. सो इट गिव्स द एनर्जी वेरी स्लोली. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से फास्टली एनर्जी nahi milti. So this one is about the complex carbohydrate. Which are the example of complex carbohydrate? Starch, cellulose, fibers. ग्रास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है. एंड स्टार्च के मैंने बताया आपको व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, ब्रेड, सीरियल्स, ऑल सीरियल्स. इन दैट स्टार्च इज प्रेजेंट. Okay, and there are three example of complex carbohydrate: starch, cellulose, fibers. Is it okay up to this? Is it okay up to this? Yeah. Okay. Sucrose is present in the sugar cane. Lactose, it is present in the milk. Milk में कौन सी sugar होती है? Lactose. Then sugar cane में sucrose. आप जो fruits खाते हैं, fruits में fructose. Okay. So like this are about the carbohydrate, simple carbohydrate, and next one that is complex carbohydrate. Now complex carbohydrate, starch. ओके स्टार्च के एग्जांपल्स अभी मैंने बताए कौन कौन से हैं. किसमें स्टार्च है? व्हीट, राइस, पोटैटो, सीरियल्स, ब्रेड, पास्ता. ओके लाइक दिस. सो दे आर द एग्जांपल ऑफ स्टार्च फूड आइटम. उन सब में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं. एंड सेलुलोज किसमें होता है? ग्रास. जो सभी ग्रास है, ग्रास में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज. सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स carbohydrate. Okay, cellulose is also present in the fibers. Fibers में भी cellulose present है. So is it okay about the first one, that is carbohydrate? Carbohydrate सबको समझ में आ गया? Yes. Anyone have any doubt? Is it okay? Just show me your thumb. Okay, I have already sent the PDF. Okay, read very carefully. Okay, read very carefully. Okay, bye.